गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एमपी लैड्स। तो आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अभी सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है आपकी एमपी लैड्स उसके अंदर कुछ रिवीजन किया है। तो आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिवीजन हुआ है, क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अब इसमें कहा गया है कि जो आपके एमपी लैड फंड के अंदर जो आपको पैसा मिलता है 5 करोड़ रुपए पर एमपी, उससे जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी उसको जो है वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस करना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि 2016 में गाइडलाइंस आई थी कि अगर कुछ इंटरेस्ट एक्रू होता है इस फंड से तो उसको एमपी लैड्स अकाउंट में डाल दिया जाएगा और उसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है बाद में। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि जानबूझकर जो है वो फंड जो है कम उसका इस्तेमाल किया जाता था एमपी लैड्स का, जिसकी वजह से क्या होता था कि इंटरेस्ट ज़्यादा एक्रू हो जाता था और वो इंटरेस्ट को एक्रू ज़्यादा करवाने के लिए एमपी लैड्स का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया जाता था। तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 करोड़ रुपीज़ का खर्चा जो है एमपीज़ द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा करवाने के लिए ये फ़ैसला लेने का ये जो है चेंज लेने का फ़ैसला किया है। ठीक है। सो अभी ये स्कीम के बारे में देखते हैं। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर हर एमपी जो है उसको 5 करोड़ रुपए पर ईयर मिलते हैं। तो लगभग 790 मेंबर्स हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा के मिला के। तो 3950 करोड़ रुपीज़ की ये स्कीम है एक तरह से। इसमें ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाए जाते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ या कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। और ये पैसा जो है वो डायरेक्टली एमपी को नहीं जाता है। वो एमपीज़ जो हैं वो सिर्फ वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। बाकी जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का ही काम होता है, उनको ही पैसा जाता है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। और एमपी के द्वारा रिकमेंड किए हुए वर्क को जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ करती हैं। ठीक है। तो इसको स्कीम को कब स्टार्ट किया गया था? 1993 में जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी तब इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। तब अमाउंट है 50 लाख मिलती थी। धीरे धीरे बढ़ाते वो 5 करोड़ रुपए जो है वो 2011-12 में कर दिया गया है। ठीक है। अब कैसे काम करती है ये स्कीम? अब हर लोकसभा मेंबर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुरुआत में ही बता देते हैं कि वो इस डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को जो है वो इस बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इस डिस्ट्रिक्ट में स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो फिर उसको फंड्स को हैंडल करना शुरू करते हैं और मॉनिटर करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को जो कि इस स्कीम के अंदर सैंक्शन किए गए हैं। जो लोकसभा के मेंबर हैं वो सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जो है फंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं या स्कीम्स को रिकमेंड कर सकते हैं। जो राज्यसभा मेंबर हैं वो किसी भी जो जिस स्टेट से वो इलेक्ट होकर आए हैं वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसको जो है वो फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कंट्री में कहीं पर भी जो है उनको इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी कोई अगर नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो जो आपके जितने भी बाकी मेंबर्स हैं वो 25 लाख रुपीज़ मैक्सिमम जो है उस साल जो है उन डिज़ास्टर हिट प्लेसेस में रिकमेंड वर्क्स वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कंट्रोवर्सीज बहुत रही हैं, जैसे कि 1999 में जो है ये स्कीम जो है वो कंट्रोवर्सी में आई। क्यों कंट्रोवर्सी में आई? क्योंकि वहाँ जो है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है उन्होंने कहा कि इसके अंदर बहुत सी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं और फंड्स जो हैं वो एमपीज़ इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये भी देखा गया कि जो है जैसे 2005 में कुछ एमपीज़ जो है उन्होंने डिमांड किया कि कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा कि अगर आपको हमसे काम करवाना है तो आपको इतने पैसे हमको देने पड़ेंगे ताकि हम आपको जो ठेका है वो हम आपको देंगे फिर इससे एमपी लाइट स्कीम का। तो ऐसे बहुत सी इरेगुलरिटीज़ सामने आती रहीं, तो इसलिए ये स्कीम जो है वो कंट्रोवर्सी में रहती है। इसको इवन सस्पेंड भी किया गया था बीच में जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो गवर्नमेंट उस फंड्स को जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए खुद इस्तेमाल करने लगी थी। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स। इकोनॉमी का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का भी टॉपिक है आपका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स के लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया है। ये वेबिनार ऑफ कोर्स कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है। तो इन्होंने इस वेबिनार को कंडक्ट किया है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो एक्रेडिटेड लैब्स हैं उन्होंने इस वेबिनार में पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि टिश्यू कल्चर क्या होता है प्लांट्स में। तो ऑफकोर्स जो आपकी हाई क्वालिटी डिसीज़ फ्री प्लांट्स को जल्दी से जल्दी उगाना लार्ज क्वांटिटी में, उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है। तो कैसे किया जाता है इसमें
की कल्चरिंग की जाती है और प्लांट के सेल्स या ऑर्गन्स जो होते हैं जो है उनका इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है, आपके इन्वायरमेंटली सपोर्टिव कंडीशंस के अंदर। जब खासकर जब प्लांट का मटेरियल बहुत कम रह गया हो या फिर वो प्लांट जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हो, तो फिर टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हुए जो है प्लांट्स को उगाया जाता है। अब इंडिया का जो है टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है इम्पोर्ट करता है टिश्यू कल्चरिंग प्लांट्स, वो है नीदरलैंड्स, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। और जो एक्सपोर्ट है हमारा वो लगभग 50% जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो नीदरलैंड्स में ही होता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, ठीक है। सो अब कुछ सजेशंस भी आए हैं, कुछ कहा गया है कि जैसे अपेडा है उनको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगानी चाहिए इंडिया के अंदर, ताकि जो है जितने भी वेरियस काइंड ऑफ फ्लोरा अवेलेबल है इंडिया में वो लोगों को जो है इंटरनेशनल जो आपके ट्रेडर्स को उनको बताया जा सके कि हम इस टिश्यू कल्चर प्लांट्स में डील करते हैं, इन फॉरेस्ट प्लांट्स में डील करते हैं। और इवन जो है अपेडा को कहा गया है कि आप एक ट्रेड डेलीगेशन भेजो अब्रॉड, ताकि न्यू मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और हम अपनी नीदरलैंड्स के ऊपर जो हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको जो है वो कम कर सकें, ठीक है। सो अब प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं? ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में, या फिर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो है प्लांट्स के ऊपर स्टडी करने के लिए, प्लांट डिसीज़ के ऊपर स्टडी करने के लिए और उनके अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो अब जो है प्लांट टिश्यू कल्चर की इंडिया में क्या स्थिति है, तो एक नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम चलाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट्स। इसके अंदर अब लगभग हम 80 मिलियन टिश्यू कल्चर प्लांट्स को हम सर्टिफाई कर चुके हैं, ठीक है। फिर अपेडा जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम भी देता है उन लेबोरेटरीज़ के लिए, ताकि जो वो है जो टिश्यू कल्चर में डील कर रही हैं वो अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर सकें, ताकि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांट जो है वो बना सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्कोहल कंजम्पशन, सोशल इशू है आपका। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक, जो अभी 5th सर्वे आया है उसके मुताबिक जो है कंट्री में 15 से 49 की एज के बीच जो ड्रिंकिंग जो आपकी एज के बीच में जो है 1% ऑफ विमेन देखा गया सिर्फ जो है वो ड्रिंक करती हैं, अल्कोहल के कंजम्पशन करती हैं। और जो है 22% ऑफ मैन जो है वो इस एज में जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, इस एज ब्रैकेट के अंदर। तो अब इसमें डेटा में कहा गया है कि विमेन जो है सबसे ज़्यादा जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन विमेन की अरुणाचल प्रदेश में है इंडिया में, उसके बाद सिक्किम में है, ठीक है। मैन में जो है वो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन गोवा में होती है। और जो है सबसे कॉमन जो विमेन है जो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी की होती हैं, ठीक है। सो इंडिया में ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा। तो भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमने कई बार पढ़ा है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो है मुंबई, उनको नोडल एजेंसी बनाया है, वो ये सर्वे करवाती हैं इन कोलैबोरेशन विद ORC मैक्रो मैरीलैंड, ये यूनिवर्सिटी है, ईस्ट वेस्ट सेंटर हवाई यूएस का, ये भी जो है यूएस की एक एजेंसी है। और यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है USAID, वो यूनिसेफ के साथ मिलकर फंडिंग देती हैं इस सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन मैन्योर। ऑफ कोर्स आपका ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो ग्रीन मैन्योर की कल्टीवेशन के लिए सब्सिडी दे रहा है, लगभग 2000 रुपये पर क्विंटल के करीब की सब्सिडी मिल रही है। और ग्रीन मैन्योर क्या होती है, आपकी सॉइल फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को बचाने के लिए जो आपको क्रॉप्स को ग्रीन मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या होता है कि आपकी जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो है क्रॉप्स जो है वो अच्छी जो है उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है। खासकर अमोनिया या जो आपकी जो आपको प्रोटीन चाहिए होता है प्लांट्स को, वो मिल जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं मेन वैराइटीज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर, तो ढैंचा, काउपी, सनहेम, ये जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। इवन समर मूंग, मैश पल्सेस और ग्वार भी जो है वो ग्रीन मैन्योर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ग्रीन मैन्योर जो है वो लेग्यूमिनस होती है और इसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल जो है वो कराए जा सकते हैं फार्मर्स को बहुत ही कम प्राइस पर, ठीक है। तो अब इसको क्यों इम्पोर्टेंस क्या है, खासकर पंजाब जैसे एरिया में जहाँ पर फर्टिलाइज़र कंजम्पशन सबसे हाईएस्ट जो है उनमें से एक है, और इवन जो नेशनल एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ग्रीन मैन्योर का जो है ऑल्टरनेटिव दे देते हैं किसानों को, तो लगभग 25 से 30% जो है वो फर्टिलाइज़र्स की कंजम्पशन जो है वो
कम हो जाएगी, ठीक है। और इवन जो पीएच लेवल है सॉइल का, जो 8.5 से 9 तक पहुंच चुका है स्टेट में, वो कम होकर जो है आपका न्यूट्रल लेवल पर, जो 7 लेवल है वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। तो आपको पता है ये आपका सिक्योरिटी के लिए टॉपिक है, और इसमें क्या हुआ है कि पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड द्वारा अटैक किया गया है। और ये वेपन क्या है, सोवियत ओरिजिन का वेपन है, हैंड हेल्ड वेपन होता है, इसमें एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर का यूज़ करते हुए अटैक किया जाता है। पोर्टेबल है, शोल्डर से फायर किया जा सकता है, बहुत इजी टू ऑपरेट है, और वाइड स्प्रेड डैमेज कर देता है ये, ठीक है। तो इसको जनरली जो है टेररिस्ट अटैक्स में यूज़ किया जाता है। इवन जो है आपके जितनी भी मेजर इंसर्जेंसी या टेररिज्म अफेक्टेड रीजन्स हैं वहाँ पर आप देखोगे इसका बहुत यूज़ किया जाता है, कॉमन है ये। वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट में बहुत इसका इस्तेमाल किया गया था, फिर अफ़गानिस्तान, सीरिया, जितने भी आपके, इवन जम्मू कश्मीर में भी जो है टेररिस्ट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह का था ये, जो मोहाली में यूज़ किया गया, तो RPG PG-22 नीटो वर्जन था। ये एक फ्रंट लोडिंग ट्यूब है, और इसमें जो है लगभग 250 मीटर तक की इसकी रेंज होती है, इसमें 250 मीटर तक का अटैक किया जा सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is MP led. So of course this topic is for your polity section, and of course for your governance section also. So the central government has recently revised the norms for utilization of money under the central sector scheme, namely MP LADs. Okay, so you know that a member of parliament gets 5 crore rupees each year at each member of parliament. So either it could be from your Rajya Sabha or Lok Sabha. So what happens is that they get 5 crore rupees each year, and to spend for the development works in their constituency or in their districts rather. And what happens is that sometimes because the money remains idle, so they have some interest income. So what was happening till now since 2016? So in 2016 government decided that the interest money that they were this MP-led fund was receiving, the interest was to be transferred to the MP-led account. But now the government has decided that all interest income from this fund would be transferred back to Consolidated Fund of India if it is unutilized. Okay, so this is being done to motivate the MPs so that they spend more and more and spend maximum in their constituency or in their districts. Otherwise they're not spending it, and they are trying to earn income through the interest, so as to carry it forward for the next year. But now the government has decided that this interest income, if it will remain, it will be transferred to the Consolidated Fund of India. So it would mean that it would lapse. Okay. So what is this scheme? Of course, every MP is entitled for 1 crore rupee, 5 crore rupees per year. It means for 790 members of Rajya Sabha and Lok Sabha, the amount comes out to be 3950 crores. Okay, so this amount is utilized for durable community assets and creation of basic facilities like even community infrastructure. And the money does not directly go to the account of MPs. They can only recommend the works which are to be done in the district. So it is the responsibility of the district authorities to work on behalf of the MPs. Okay. So Ministry of Statistics and Program Implementation, of course, monitors this scheme, and they transfer the funds according to that. Okay. So when was this scheme started? Narasimha Rao government in 1993 started this scheme, and they initially gave a grant of 50 lakh rupees to each year to MPs. Later on, this sum was actually increased, and now in 2011 and 12, this sum has been increased to 5 crore rupees. Okay, so how does it work? Of course, every Lok Sabha MP has to designate a district as the nodal district in which they want the district authorities to implement the works. So thereafter, the district magistrate is responsible for handling the funds and monitoring the projects. Okay, so Lok Sabha member can only recommend works in his constituency alone, whereas the Rajya Sabha member can recommend works anywhere in the state from which he or she is elected. Okay, similarly for nominated members of the parliament, they can recommend works in anywhere in the country. Okay, so in case there is a natural calamity, all MPs from even the non-affected areas, they can recommend works in those areas, but the maximum limit for that is 25 lakh rupees per year. Okay,
So there has been several controversies, like in 1999, Jammu and Kashmir National Panthers Party chief alleged that there has been um, uh, misuse of funds by MPs. And in 2005, there was also a sting operation in which some MPs were demanding money from contractors in return for awarding projects under the scheme. So there has been several controversies to this MP Lads project also, MP Lads scheme also. So the next topic is tissue culture in plants. So this is of course your topic for environment and even for your economy section. So recently Center has conducted a webinar on export promotion of tissue culture plants. This webinar was of course conducted by APIDA, that it falls under the domain of Ministry of Commerce. We have already discussed about it several times in our prelims booster session, and this webinar involved participation from Department of Biotechnology accredited tissue culture laboratories across India. And what is tissue culture? First of all, plant tissue culture. What is plant tissue culture? We have to understand that. So it's basically a new technique or a novel technique to grow high quality disease free plants quickly and in large quantity. Okay, so what happens is that you culture and maintain plant cells or organs, and you give them in supportive environment conditions, and you then culture them, and you try to grow those plants in vitro. Okay, so especially those plants which are scarce in nature, or those who are on the verge of extinction, this technique becomes very important for their growth, for their large scale growth. Okay, so India imports tissue culture plants from almost 10 countries. These are mentioned here: Netherlands, USA, Italy, etc. And in 2020-21, India's exports of tissue culture plants was more than 50%. About 50% of the shipments were earmarked for Netherlands alone. Okay, so certain suggestions have been received during this webinar that that APIDA should organize an international exhibition in India, so that we can showcase the various kind of flora which are available in India. And APIDA should also send a trade delegation abroad to identify the to identify the new markets for tissue culture plants. Okay, so similarly, what are the applications for plant tissue cultures? So of course, apart from its use in pharmaceutical, medicinal, and the other industrial compound making, it can also be utilized for studying purposes, studying of various plant diseases, and even to study how respiration and metabolism of plants occur. So this plant tissue culture has a lot of application apart from pharmaceutical industry. Okay, so in India we have this national certification system for tissue culture raised plants, and it has so far certified more than 80 million tissue culture plants through this system. Okay, so APEDA is also running a financial assistance scheme, so that the Department of Biotechnology accredited laboratories, they can upgrade themselves, so that they can produce high quality, export quality tissue culture plant material. Okay, so the next topic is alcohol consumption. Of course, this is a topic for your social issues. And recently, National Family Health Survey has found that only 1% of women between the age brackets of 15 to 49 consume alcohol in the country, compared to 22% of men in the same age bracket. So this data is suggesting that the percentage of women who consume alcohol is highest in Arunachal Pradesh, and among men, the alcohol use is highest in Goa. So women belonging to the scheduled tribes drink more alcohol as compared to other communities. So what is this NFHS? This National Family Health Survey is basically a survey conducted by the International Institute for Population Sciences in Mumbai. It is the nodal agency, designated as the nodal agency by the Ministry of Health and Family Welfare. And this survey is conducted in collaboration with ORC Macro Maryland and East West Center of Hawaii, that is in US. And this survey is also funded by the USAID, and some supplementary support is given by UNICEF. Okay, so not the Ministry of Health and Family Welfare does not conduct this survey. It is actually it's a collaborative effort of IIPS, ORC, and East West Center. Okay, so the next topic is
green manure. So of course this topic is for your environment section. So recently Punjab Agriculture Department has started cultivation of green manure, and they're also providing subsidy on the seed at the rate of 2000 rupees per quintal. So what is green manure? Basically the crops which are grown specifically for maintaining soil fertility and structure, and these nutrients are normally incorporated back into the soil. So basically these are leguminous crops. Leguminous crops, you know that they are famous for fixing large amount of atmospheric nitrogen in the soil so as to increase the nutrient content of the soil. And certain varieties have been identified like dhancha, cowpea, and sunham, and even even summer moong, mashed pulses, and guar can act as green manure. So basically, these manure must be leguminous in nature, and these green manure seeds can be made easily available to the farmers at a low price. Okay, because why it is important for Punjab, especially because Punjab has a per hectare fertilizer consumption which is one of the highest in the country, and it also has the consumption level higher than the national average. So even if we can this using this green manure, we can bring this consumption level uh, uh, to a large extent. By 25 to 30%, we can bring this fertilizer consumption lower by 25 to 30%. Okay, and it will also help us to keep the pH level of the soil in the required level. Currently it is more than 8.5 to 9 level. We can bring it down to 7, that is the neutral level. Okay, so it is important to adopt this green manure because it is cost effective also, and it is environment friendly also. Okay, so the next topic is rocket propelled grenade. So this is of course a topic for your security section, and recently this rocket propelled grenade attack was found on Punjab police headquarters. And this RPG is a weapon of Soviet origin, and it is a handheld anti-tank grenade launcher. It is portable, one can carry it on his shoulder, and it is easy to operate, and it can cause widespread damage also. So in several insurgency and terrorist incidents, this has been utilized. You may have seen it very often also. It has been utilized in almost every terrorism or a major insurgency related areas, like your even Vietnam conflict, Afghanistan, and even in our Jammu and Kashmir, the terrorists use this rocket launcher for attack on security forces. Okay, so what kind of RPG was used in Mohali? Of course, RPG PG-22 NATO version was utilized, and it has a front loading tube, and it has an effective range of almost 250 meters. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.